Hello students. So today we will solve question number 2, chapter number 10 GST from the book DK Goyal. Okay. Now see the question. Pass the entry in the book of 𝗤𝗪𝗘𝗦 and brothers, Odisha, assuming all the transactions have been entered within the state, charging the CGST and SGST 9% each. ठीक है? As you know, when the transaction, all the transaction will happen within the state, that transaction is known as intra-state transaction, and in that case CGST and SGST will be charged. Now first entry is on March 4 purchase the goods of 5 lakh rupees from the Sunil brothers. So the entry will be 4th March entry will be purchase account debit input CGST account debit input SGST account debit. 2. Purchase goods from the Sunil brothers to Sunil brothers. Sorry, brother nahi, Sunil, to Sunil account. To Sunil account. To Sunil brothers account. So 5 lakh $45,000. Purchase amount will be 5 lakh rupees, 45,000 and 45,000. Total 90, 5 lakh 90,000. My creditor Sunil will be increased from 5 lakh 90,000 being goods purchased. Okay. Now second, goods returned to the Sunil brothers for 20,000. Clear? Now the entry is 7th March. Goods returned to the Sunil brothers. आपने goods return कर दिया. Okay. So the entry will be what? Sorry. Sunil brothers account debit. Why? Because my creditor will decrease. My creditor Sunil brothers will decrease. So we write Sunil brothers account debit to purchase return. To purchase return. To input. The reverse of this entry, input CGST to input SGST account. So the purchase return amount is 20,000. We write here 20,000 and 9% 1800 36 236,000. Okay, I think this point will be clear. Being goods return. Now on 10th March goods sold goods to Mehta and Company for rupees 8 lakh rupees. 10th March entry is sold goods to Mehta and Company for 8 lakh. सेल हो रहा है 8 लाख रुपीस का. ओके. टू Mehta and Company, तो Mehta and Company is my debtor. तो Mehta and Company account debit to sales account to output. In the case of sales, okay, in the case of sales you write output CGST and SGST. To output CGST to output SGST. Sales amount is 8 lakh rupees. Okay. Now write it is 8 lakh rupees. 8 lakh and 9% 72,000.
72,000, 72,000. 944,000, 9,44,000. Okay, being goods sold to Mehta and Company. Now next point is 12. Goods returned by Mehta and Company for 30,000. Goods returned by Mehta and Company on 12 March. Goods returned by Mehta and Company for rupees 30,000. Okay, this is the reverse of this entry. So you write Mehta is my debtor, and if the debtor will decrease, it will goes into the credit section. So the entry will be sales return account debit, sales return account debit, then output CGST debit, output SGST debit. How much? Sales return amount is 30,000. Write 30,000, 30,000, 9%, 2,700, 2,700, 2,700, 5,400. Then to Mehta and Company account 354,000, 35,400. Okay, this is also completed. Now on 20 March, goods withdrawn by the proprietor for the personal use. 20 March, goods withdrawn by the proprietor. Okay, proprietor जो है goods को withdraw करता है अपने personal use के लिए. So in that case, the entry will be what? Entry will be drawing account debit to purchase account to input CGST. I explained to input SGST. So the goods withdrawn by the proprietor are of value 10,000. जो परचेज हमने 10,000 की वैल्यू थी तो यहां लिख देंगे 10,000. 10,000, 900 input CGST, 900 output CGST, 18,118,000. देखो ऐसा किए क्यों है, समझिए बात को. गुड्स जो है परचेज जो गुड्स था उन्होंने स्टॉक को परचेज को पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया है. ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी नॉर्मल. अगर जीएसटी ना होता तो क्या एंट्री होती? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि गुड्स विड्रॉ कर रहा है. ठीक है, गुड्स विड्रॉ कर रहा है, कैश नहीं. अगर कैश होता तो एंट्री क्या होती? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश. क्लियर है? बट इन दैट केस ही विड्रॉ द परचेज, ही विड्रॉ द गुड्स. ठीक है, ही यूज द गुड्स, कंपनी गुड्स. सो द एंट्री विल बी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज. अब इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट इनपुट एसजीएसटी लिखने का क्या मतलब है? यहाँ पे लिखने का ये मतलब है कि जब हम परचेज को यूज कर रहे हैं, देखिए इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी हमारा एसेट होता है. ठीक है, ये हमारा एसेट होता है. एसेट इसलिए होता है क्योंकि ये आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट में ये सेट ऑफ होता है. अगर हम इसको यहाँ पे यूज कर लेंगे, हम यहाँ पे जब इनपुट हम सीजीएसटी एसजीएसटी को तभी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, एसेट की तरह यूज कर सकते हैं, जिस गुड्स को हम परचेज तो किए हैं लेकिन उसको सेल करने के लिए किए हैं, ना कि हम अपने पर्सनल यूज के लिए करें. ठीक है, अगर हम परचेज करें और उसको हम अपने पर्सनल यूज करने के लिए यूज कर लें और उसका हम बेनिफिट भी ले लें तो ऐसा नहीं होता है. ठीक है,
आप उसी गुड्स का बेनिफिट ले सकते हो, आप उसी जीएसटी का बेनिफिट, गुड्स पे जो जीएसटी आपने पे किया उसी का बेनिफिट ले सकते हो, जिसको आप एक्सपेंस के लिए यूज कर रहे हो, बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, ना कि अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, यहां पर इन्होंने जो परचेज किया था इस पे इनपुट जीएसटी तो भरा होगा। ओके, इस पे इन्होंने इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी तो फिल किया होगा ना। लेकिन अब क्या कर रहा है, ये इसको पर्सनली यूज कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया, क्योंकि अब ये इनका एसेट डिक्रीज हो गया है। ठीक है, ये एसेट होता है तो एसेट डिक्रीज हो जाता है, तो इसलिए हमने इसको 900 यहां लिख दिया है। मतलब कुल मिला के बात इतनी है, आप ये समझना कि अगर परचेज कर रहे हैं, ठीक है, परचेज करने पर जो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी हम लोग पे करते हैं, तो डेट इज बिहेविंग लाइक एन एसेट। ओके, डेट इज बिहेविंग लाइक एन एसेट, बट व्हेन वी, लेकिन जब हम इसको ड्राइंग कर लेते हैं, व्हेन वी यूज दिस आइटम एज अ पर्सनल, ठीक है, अगर हम इसको पर्सनली यूज कर लेते हैं परचेज को, स्टॉक्स को, तो वो मेरा एसेट जो है आगे हम सेट ऑफ करने के लायक नहीं रहते हैं। ठीक है, तो हम इस एसेट को डिक्रीज कर देंगे, और डिक्रीज करने पर ये क्रेडिट साइड में शो होता है 900। क्लियर है? नाउ 10,000 क्लियर? हाँ, 25 goods distributed as the free sample. Again the point is goods distributed as the free sample. So free sample या एडवर्टीजमेंट लिख लो, चलो अच्छा रहेगा ये। Free sample is also a type of advertisement. So advertisement account debit to what is going to reduce? Goods is going to reduce of 5,000 to purchase account. Again the same condition is this: if you distribute the stock as the free sample, okay, if you distribute your stock as the free sample, then you will not be allowed to take the advantage of this input CGST and SGST. Okay, so the next entry will be to purchase account to input SGST, sorry, CGST to input SGST. Entry will be purchase 5,000. Goods is reducing by 5,000. 5,000 450 900 entry 550 900. Clear है? Now the next is paid advertisement expenses by the check. सो एडवर्टीजमेंट यहां भी है, तो इसको फ्री सैंपल ही कर लो। ठीक है, राइट इट एज फ्री सैंपल। नाउ 26 मार्च एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस account debit. Now see, advertisement is the type of expense on which you have to pay the GST. Which GST? Input GST, input CGST, input SGST, of value. Advertisement expense is 20,000. 1,800 to bank 36,236,000. Now it is clear. Now the next is payment made of the balance amount of the GST. Now first we calculate the amount of the GST. So calculate the input computation of GST, input CGST. Now see, where is input CGST? In the debit column.
If the input CGST is in debit, then it is positive, and when the GST input GST in the credit, it will negative. 45,000, 45,000. Clear? Here the input GST in the credit section 1800 minus 1800. Again output. Now here again this is in the credit column minus 900. Now again this is in the credit minus 450. Now this is in the debit plus 1800. Plus 1800. It means minus or plus cancel out. Now 45,000 minus 900 minus 450. 43650. Amount is 43650. Input SGST will be the same, 43650. Now output GST, output CGST. Now see where the output CGST, the nature of output is in the credit column. ठीक है, liability होती है ये. So here the output GST is in 72,000. So 72,000. Again, but now see output GST in the debit, it means it is the negative value, minus 2,700. Minus 2,700. Now next nothing. 72,000, 2,700, 69300, 69300. Output SGST, again it will same, 69,300. Clear है? Now make the entry of the GST. 31st March. First of all, we write the output GST. Okay, because it is the liability, and when the liability will goes down, it will goes into the debit column. So output CGST debit, output SGST debit, to input CGST, to input SGST. Output 69300, 69300. You have the asset of input 43650, 43650, 43650. Okay, this asset is set off against this liability, so the rest amount will be paid by the bank to bank account. $69300 minus 43650, $51300. Okay, clear. 51300. Being GST paid. Clear? So by this way your question number 2 is also completed. So by this way your question number 2 is completed, and in the next video we will see question number 4. Okay.